Welcome back to Game On Hay. We're discussing the match today between Pakistan and Namibia. We've had a look at the Namibia squad, we've had a look at their chances. We've probably ruled them out, to be honest, but that's still to be decided by the actual game itself. Who knows in this game of cricket what might happen. But as we've looked at Pakistan as well, we've talked about their possibilities, we've talked about their chances maybe to give one or two players a chance to have a game for the first time in the Super 12s. It is quite possible they might just keep the same squad and be absolutely ruthless. Now, what's been working really well for them, of course, is the opening partnership. And we can remind you by looking at action we've had from before in this Super 12s, remind you just how good, for instance, Babar Azam has been. He's led from the front, he's a very, very good leader, and he's obviously a very, very good opening batsman. And that form, especially in that opening game against India, I mean, no one needs reminding about this. This was, I think, one of the great sporting moments for Pakistan in the last decade. Yes, of course, both Babar and Rizwan, the way they chased down this total, they made it look very easy. Of course, whenever there's a match between India and Pakistan, it's a high pressure game. It's the first match of the World Cup. We have never beaten India men's team in a World Cup, and these two were the ones who did it for Pakistan. It was stunning stuff, I have to say, as a neutral observer. And stunning batting, full of confidence, full of great shots. It made India's attack look very ordinary on the day. And to see India's heads go down, I'm sure was very pleasing for a lot of people in this part of the world. I mean, a famous victory indeed. Famous victory born on passion and a lot of skill. Aaqib. I mean, look, never happened. No one did it but Babar and his team, and hurt them so bad that still struggling to come back in this tournament. Yeah, I mean, that's the effect. 10 wicket losses are not easy to digest. ये देखो सना सर, it's ये a tough देखो जो one. बाबर की स्ट्राइकिंग थी ना, बॉल को अपने पास आने दिया अंडरनीथ हिज आईज और फिर वो जो शॉट खेले हैं, दैट्स द क्वालिटी ऑफ बाबर कि जो है ना बॉल को बड़ा लेट खेलता है कि उसकी स्ट्राइक देखें आप कि बॉल को कहाँ मीट करता है, जहाँ आप स्पिनर के पास जाता है तो आगे से बॉल ले रहा है और फास्ट बॉलर का बॉल आने दे रहा है और पंच जो बैकफुट पे करता है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। राशिद भाई, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बाबर लास्ट 3 इयर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है। थोड़ा सा अपना बैटिंग स्टांस चेंज किया था, जैसे खड़े होते हैं थोड़ा और खोल के तो बैलेंस ज़्यादा हो गया। जैसे अजहर ने बात की, बॉल को अपने पास आने देते हैं, जब आंखों के नीचे होते हैं उसके बाद टाइम करते हैं ये। तो इनकी टेक्निक अगर देखी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। इनको मिलाया जाता है जो रूट के साथ, स्मिथ के साथ और विलियमसन के साथ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तीनों फॉर्मेट में मिलाया जाता है कि ये ग्रेट प्लेयर है। लोग हमसे पूछते हैं यार पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, तुम्हारे पास क्या है? अक्सर इंडियन जो हमारे फैन हैं या दोस्त हैं पूछते हैं, हमने कहा हमारे पास बाबर आजम है। एक प्राइड है हमारे पास बाबर आजम की सूरत में। अब शाहीन आ रहे हैं, हारिस रऊफ आ रहे हैं, फ़खर हैं। टीम जीतती है तो बहुत सारे स्टार डेवलप होते हैं, बनते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से पाकिस्तान टीम की प्रोग्रेस है इस वर्ल्ड कप में, और बहुत सारे सुपरस्टार और बनेंगे, क्योंकि हम 90 से निकल ही नहीं रहे। अगर आप शोज देखेंगे 90 से निकल ही नहीं रहे किससे कहानियां, लेकिन ऐसी विन जब होंगी तो 90 का चैप्टर खत्म हो गया। जैसे इंडिया ने 10 साल पहले अपने 90 का चैप्टर क्लोज कर दिया था। और आज को आपको पाकिस्तान टीम को जिंदा करना है तो आज आप बाबर को स्टार बनाएं, आप शाहीन को स्टार बनाएं, आप फखर को स्टार बनाएं, तो हम जाके उस अपनी पुरानी कहानियों से निकल के आज के दौर में आ जाएंगे। ये राशिद भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि वो 90s में से हम निकल ही नहीं रहे। अब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की जो विन थी, जो ये टीम ने जीती है, मतलब उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। वो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, कभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग नहीं जीते, या वर्ल्ड कप के बाद वही जी 2009 वाला, उनकी कोई बात ही नहीं करता। वो प्लेयर्स उसके बाद तो टीम तोड़ने पे शुरू हो गए ना हम लोग। उसी टीम ने जिसने जीता है उसका कोचिंग भी हटा दी, सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम रहा है, जब कोई चीज अच्छी होने चलती है उसी को रोक के हम उसके अंदर उसको मजीद बेहतर करने के लिए उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। पर एक और स्टार है बाबर के साथ जो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है बाबर आजम की बैटिंग को, और वो है मोहम्मद रिजवान। उनकी भी बैटिंग को देखेंगे, 79 उन्होंने जो 55 बॉल्स पे इंडिया को बनाया। और हम लेके चलेंगे अपने इंग्लिश पैनल की तरफ। मोहम्मद रिजवान कॉम्प्लीमेंट्स बाबर आजम एंड दे बोथ मेक ईच अदर लुक मच बेटर। Well, I can tell you for sure that Babar Azam is a class act. Whenever you see him batting, he looks to be in control every time. And who says that you've got to bully the ball every time in order for you to score runs? He's just a classical player, you know. And
it sends the message to individuals, you know, who cannot power the ball over the boundary on a regular basis, or gets the maximum at times, that you can still play a part as a batsman if you can play good shots, and the most important thing, finding the gaps. That I think is important. He's very special. But with Rizwan as well, I mean, at the other end, you've got two guys who are top quality. The absolute Energizer top Bunny. quality. The Energizer Bunny. And Rizwan, you see the charts here. Rizwan was outscoring Babar actually, which is quite likely to happen the way they play. But when they play together like that, it's extraordinary. I mean, he started at lower middle order. Even he was with different franchises, Lahore as well. So never get opportunity to bat at the top. People always believe that he's a busy player, so should bat in the middle. But one opportunity at the top, and he never looked back. From last 2 years, I think he is the most successful T20 player Even test in the match, world. yeah. Even the test matches. The good thing about him is quick hands and the ability to take singles. I think Babar and Rizwan is good combination, because Babar, as you mentioned, that if you are a batsman, if you wanted to be successful, consistent, play in front of your eyes. He doesn't believe in innovations. He believes in proper cricket shots. And Rizwan, though looks very risky at time, but he's got good eyes, quick hands, and very consistent hitting the ball. Can someone tell me who was the individual responsible for getting him at the top of the order? I think that's Misbah. That to me, it's a good find. It's a good find, because we have seen the results. इसमें एक चीज़ और कि दोनों जब खेलते हैं तो बाबर उस वक्त तक चांस नहीं लेता जब तक रिजवान जब हटेंगे उसके बाद बाबर कंट्रोल करता है, वरना सारा स्ट्राइक देखें मोस्टली गेम को जो रन कर रहा होता है वो रिजवान कर रहा होता है. ठीक है, शुरू के ओवर में टाइम करता है, गैप में शॉट्स खेलते हैं ये बाबर, लेकिन जब रिजवान हटते हैं उसके बाद पूरा कंट्रोल अपने पास. ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है. स्ट्रेटेजी जो है दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह से हम अपने दौर में कह सकते हैं आमिर सोहेल सईद अनवर की थी कि जब तक सईद अनवर होता था आमिर सोहेल चांस नहीं लेते थे. तो सेम चीज़ नज़र आ रही है इन दोनों में कि जब तक रिजवान होते हैं तो ये चांस नहीं लेते. मोस्टली दोनों ही 10 ओवर तक विकेट पिच पे मौजूद होते हैं, जिसका बेनिफिट पाकिस्तान टीम को हो रहा है. बिल्कुल. और आपने बॉलिंग पार्टनरशिप्स की बात की, ये बैटिंग पार्टनरशिप्स में इस वक्त सबसे ज़बरदस्त दुनिया में, खाली पाकिस्तान में नहीं, पर ओपनिंग अगर पार्टनरशिप्स की बात करें, बेस्ट प्लेयर माशाल्लाह इस वक्त नज़र आ रहे हैं दोनों. जी बिल्कुल. आप देखें उनकी जो लास्ट परफॉर्मेंसेस है, कितने 100 पार्टनरशिप कर चुके हैं, और दोनों ग्रेट प्लेयर्स है, और मज़ा आता है देखने को, स्पेशली बाबर को, और फिर उसके साथ रिजवान. जिस तरह रिजवान की मैं बात करूंगा कि फर्स्ट टाइम जब ये खेल रहा था हमारे अगेंस्ट खेल रहा था एचबीएल के अगेंस्ट पेशावर से, तो काफ़ी इसका नाम आ रहा था कि यार इस तरह पेशावर से एक लड़का अंडर 19 खेल के आया, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर है और उसमें क्वालिटी है. और एस्टलम मेंबर के हम जब मैच खेल रहे थे ना बिल्कुल ग्रीन टॉप विकेट पे, और जिस तरह ये आया था बैटिंग लोअर ऑर्डर में आया था एज ए विकेट कीपर गया था, SNJPL से खेल रहा था, तो इसके लिए ये पहले से शॉर्ट बॉल पे बड़ा अच्छा था. हमने 2-3 फील्ड लिए थे उसके लिए, और मैं ही बॉल कर रहा था, और जिस तरह लाइक फास्ट विकेट था, और जिस तरह ये उसको खेल रहा था कंट्रोल के साथ, तो ज़बरदस्त लगा उसी टाइम से. और अगर आप इसकी वर्क एथिक देखें ना, तो इसकी जो शॉट है, जितनी भी अभी ये शॉट खेल रही है, अगर लास्ट मैच में जिस तरह ICC ने भी इसकी वीडियो लगाई थी ना कि विजुलाइज करता है, तो जो भी वो शॉट विजुलाइज उसने किया, आई थिंक इस पे ये पूरा काम करता है, जिस पे इसको कमांड हासिल हो गई है. तो मेरा ख्याल से बड़ा हार्ड वर्क है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बड़ा ब्रेव है, अंदर से बड़ा दिलेर है. तो आई थिंक ये सक्सेस है, और गुड कि एक अच्छे काफ़ी अर्से के बाद हमें ऐसे ओपनर मिले कि जो रिलायबल है और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं. Zabardast. Umar Gul is saying that he has played with him at domestic cricket as well, and his work ethic and the bravery, and with that the control that he has on his shots, that has been remarkable. Well, he's brilliant. He's an absolutely brilliant player. Let's talk about Mohammed Hafeez then, who's what's known as an experienced player. He's the other side of 40 nowadays. He still seems very fit, but how much do we think is still left in the tank? We definitely hope that at least 2 or 3 match-winning performance, whether with the bat or the ball, because he has the potential to win matches from both.
and now as we approach the end of this tournament, also the knockout stages, we of course all of us would want him to go on a high while taking Pakistan on a high too. So आप क्या कहेंगे राशिद भाई? इसमें देखें बैटिंग तो इनकी लास्ट 2 ईयर से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन अभी इन पिचेस के ऊपर टू अर्ली कर रहे हैं, जाते ही साथ बड़े छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये आउट हो रहे हैं तो हमें 40-50 बॉलें रह जा रही हैं, तो इनको एक है कि मुझे जल्दी, क्योंकि ये एज ए ओपनर सारी जिंदगी बैटिंग की है, इनको लगता है कि आधा मैच चला गया है, ऐसे गलत है इनका। ये बिल्डिंग देखें, बिल्डर देखें, लास्ट ये 21 से 30 रन तक देखें, इनका स्ट्राइक रेट हमें चेक करेंगे तो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। शुरू की 1 से 10 बॉल तक स्लो हैं, फिर 20 बॉल तक स्लो हैं, लेकिन प्रोग्रेस इनकी है कि ये लंबा खेलते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट बढ़ता चला जाता है। इनका तकरीबन 16 से 20 ओवर तक अराउंड 200 का स्ट्राइक रेट है, तो इनको शुरू में अगर ये बॉल आराम से खेल भी लें डॉट बॉल, लेकिन ये रिकवर कर सकते हैं पूरी तरह से। तो लास्ट जो हम देखा जाए लास्ट 5 ओवर में पाकिस्तान के लिए बेस्ट जो परफॉर्म किया वो हफीज ने किया है, तो इसलिए यहाँ पे अगर कुछ डॉट बॉल हो जाए, स्ट्राइक रेट कम भी हो, कोई इशू नहीं है, ये छक्के मारने जो जा रहे हैं उसको कम करें, आखिर के ओवर में चांस लें। अजहर भाई आप कुछ ऐड करें? नहीं, डेफिनेटली जिस तरह की हफीज की परफॉर्मेंसेज लाइक हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में भी, वो पहला बॉल खेलने आए, इसने टफ सिचुएशन थी, पहले बॉल पे निकल के उन्होंने चौका मारा, और हमने इस टूर्नामेंट में भी देखा, ठीक है। तो वो अग्रेसिव नेचर, क्योंकि जिस तरह 4 नंबर पे आ रहे हैं तो थोड़ा अग्रेसिव खेल रहे हैं। जो राशिद भाई ने बात की कि आपको असेस करना पड़ेगा, कंडीशन को देखना पड़ेगा कि किस तरह का बॉल आ रहा है, क्या है। हफीज में ये एबिलिटी है कि वो शॉर्ट बॉल भी अच्छा खेलते हैं, आई थिंक पिछला बॉल बड़ा अच्छा खेलते हैं, उसके बाद जो है ना एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलते हैं, और उनमें ये क्वालिटी है कि अगर डॉट बॉल हो जाए तो वो फिर पैडल भी खेलते हैं। तो ये उनमें उनके पास सारे शॉट्स हैं। इस जस्ट के अभी थोड़ा सा जब से सेकंड PSL हुआ है उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं हुई, वो एक इनिंग्स अवे है। मतलब हम बात करते हैं कि 40 का हो गया, लेकिन हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कब तक खेलेंगे, ये प्लेयर को खुद डिसाइड करना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो एक इनिंग्स अवे है, मतलब जो है ना, उस दिन भी उन्होंने पहले छक्का मारा, बड़ा अच्छा पहले बॉल पे छक्का मारा, उसके बाद ट्राई किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच हो गया। तो आपको थोड़ी सी लक चाहिए इस गेम में, तो वो लक अगर आएगी तो आई थिंक ही इज अ ग्रेट फिनिशर फॉर पाकिस्तान। So they do believe he's a great finisher. He generally builds up the innings and accelerates at the end, but at the moment he's going a bit too aggressive at the start. If he can just give himself a little bit more time to be in the center, he has all the potential. Yeah, that chart you showed, the innings builder, where it was something like 100 strike rate at the start, building up to 130. By the time it finished, 160. If you allow yourself that chance, if you hang around long enough to do that, then that's almost the perfect way to build even a short form innings. I mean, look, the way Rizwan and Babar started their inning, most of the time they're playing like 10 overs, and then Hafeez gets in. By the time Hafeez gets in, the asking rate is always like 8 to 9. So Hafeez's role is, because you have the luxury of having Shoaib Malik at the back, who can tackle the pressure and taking all the singles and rotating the strikes. But they gave Hafeez a role, go smash it and finish the game, ease out till the end, and then they have Asif Ali in the end, making the game away from the opposition. So I think they gave him a role, just go out there and play aggressive cricket. एक चीज और, ये लास्ट मैच में जैसे हफीज ने मौका दिया कि शोएब मलिक को, हफीज ऐसा प्लेयर है जो कि मेरे मैच खत्म हो, चेज कर रहे हैं तो दूसरी टीम से हाथ मिला के इसको आना चाहिए कि फिनिश करके आ रहा है, ये खुद आउट होकर दूसरों को मौका दे रहा है कि आप हाथ मिला के आए। तो ये चीज अभी नजर आई है लास्ट 6 मंथ में, वरना हफीज की अगर उससे पहले हम परफॉर्मेंस देखें आउटस्टैंडिंग है। एज की बात की अभी 40 ईयर्स, लेकिन इसकी बॉलिंग देखें तो मजीद बेहतर होती चली जा रही है। इस इवेंट में 2 दफा बॉलिंग की है, तो एज जस्ट ए नंबर है इसके लिए, हफीज के लिए। और बॉलिंग अगर देखें, हफीज तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर होगा इस पूरे इवेंट के अंदर, बेटर देन मोइन अली से इसका इकोनॉमी रेट होगा। तो यूटिलाइज करना है हमें, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना है हफीज को कि किस तरह से अपनी इनिंग को बिल्ड करनी है। So yeah, a lot of backing for Hafeez here, and of course, what do you want to say, sir? I'm also in Hasif's corner. I think himself and Salim Malik brings a lot of experience, and
to me, the younger players look up to these guys because they would look at them at their age as well and would be quite respectful for guys who are in their 40s, if I'm correct in saying that, who can still get it done. Not just basically with bat and ball, but in the field as well. So I think they are a very important part of this Pakistani team. They're the engine room, in my opinion, because when they get things going, Pakistan wins. And with Asif Ali in the last match, he also said that presence of Shoaib Malik at the other end helped him finish that match also, so like you said. Just. Yeah, it's they're highly experienced, and to have him in the team, you know, is just fantastic for younger players and all the other individuals. And the most important that I would stress is the fact that these at their age, you know, some of the younger players would maybe have to step their game up to get themselves in the same sort of a fitness mode as these guys. They send a great message to the team in all. You know, if you see all the teams, India shifting from Dhoni to a new regime, and there is no real experience in the middle. Same thing with the Sri Lanka, and same thing happened to Pakistan when they go wrong, bringing all the new guys and experimental too much. And when you say age means what? Are you fit enough to field? Are you fit enough to bowl? If you're fit enough to bat, that's important. When we, you know, that they're criticizing Chris Gale, so he's only one way. He can do only one job: stand and deliver, batting. Can't bowl, can't field. So this is what the age matter. And going forward, I mean, look, you cannot change a player until you have his replacement. Yes, totally agreed. But replacements don't always... Obviously no more needs to be said. But at some stage you have to groom that replacement. Anyway, we'll come back to that another day. Let's look at the bowling now, which has been working largely pretty well for Pakistan, certainly in the opening overs, where Shah Afridi has been absolutely outstanding. And let's face it, if you've got someone of this calibre, and when he starts off with a delivery like that against acknowledged as one of the finest players in the world, and then follows it up, so having got rid of Rohit Sharma, follows it up like that against KL Rahul, that's going to do damage to the prospects of any opposition team. That delivery against KL Rahul, I think that's 150 coming the ball in of the tournament for me. So right far. on the toe, and the second one, a perfect length, and swung in. Early on, you have no chance. There is something in the pitch. Can you tell me how you play that? He played it the best way, getting knocked over. His position was perfect. Perfect, yeah. After but the it swung very late. After the ball. Very After late. the ball. Very Position late. was He talking has the about- ability to swing the ball very late, and you know the quality of Shah Afridi. He pitched the ball up with a new ball, so that's why he's so successful in all format of the game. Urdu mein baat karta hu, sorry. The only thing that I'm worried about him for, he's a young man and he plays in all formats these days. So it's going to be important how well you manage him, and you got to take care on a regular basis because he's your jewel, you know. So it's important that you manage him as well as you can, and that he'll be able to do all these nasty things to batsmen as the years go by, you know. क्या हम उस ग्राफ पे वापस आ सकते हैं जो पहले आप लोगों ने दिखाया था आकिब से एक शाहीन? सवाल कर रहा हूँ। जी आप शुरू से ये- देख रहे हैं अंडर 19 तक दिखाते रहे वो दिखाते हाँ रहे। जी ये देखें और जो बॉलिंग जब ये करते हैं शाहीन, आकिब जब शुरू में आए लाहौर कलंदर में आए तो इनकी अलाइनमेंट थी या जो पैरेलल पाँव गिरते थे, अब जरा नजर आ रहा है कि थोड़ा सा क्रॉस बेस नजर आ रही है इनकी, थोड़ा ये पाँव बाहर जा रहा है। ये चेंज हुआ है या चेंज करवाया है या ऑटोमेटिकली हुआ है? इन उर्दू? हाँ इन उर्दू। ओके उर्दू। शुरू में ये भागता था ना तो इसकी रिस्ट में लचक ऐसे करके ऊपर जाती थी तो वो लॉक नहीं होती थी बिकॉज सिर्फ इसका बॉल अक्रॉस जाता था। जब से इसने ये जब आप
इधर बॉल करते हैं तो your head and body falls away a bit. So when you even thinking of bringing the ball in, your head and your body goes slightly straighter or inner. So this is how he improved. The other day they actually shown his action 3 years back, and now with this bringing the ball in, his body gets straighter. He's got more balance and good view at the batsman, and with this, the jewel of any left arm fast bowler is pushing across and coming in. That's the मैं इस पे quality. बात करता हूँ, मैंने इस पे काम किया है, बिकॉज इसकी अलाइनमेंट जो थी ना, आप कह रहे हैं कि बाहर जा रहा है, अभी दोबारा फिर थोड़ा सा बाहर जाने लग गया, क्योंकि जिस वक्त आप बाहर आपकी फ्रंट लेग वायर पड़ती है ना, तो आपका एंगल सिर्फ बाहर जाता है, ठीक है। तो हमने इससे के साथ काम किया था कि इसकी रिस्क को यहाँ से इधर लेके आए थे, और नीचे से जो अलाइनमेंट है टांग को अंदर लेके आए थे। जिस वक्त टांग आपकी अलाइनमेंट ऐसे होती है, देन यू कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज, तो वहाँ से गेंद अंदर भी आता है और बाहर भी आता है। अभी क्या हो रहा है कि जिस वक्त ये ज़्यादा जोर लगाता है, उस वक्त आप इसका देखेंगे फ्रंट लेग जो है ना बाहर गिरती है, उस वक्त इसका बॉल नहीं जाता। जिस वक्त आगे जिस वक्त आता है, जो हमने बात की थी कि रिस्ट जो है ना रश भाई यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो देन बॉल अंदर आता है। Okay, we need to look at Haris Rauf as well, who seems to have learnt new tricks in the last, I don't know, few months, weeks, whenever it might be, because, for instance, when people looked at him in those closing overs, he's certainly got pace, definitely got pace. He seems to have acquired a slower ball quite recently, which has also done the trick. And this is another man, I mean, they're both fired by immense enthusiasm, aren't they? Absolutely. Fast bowler to fast bowler. Umar bhai, क्या कहेंगे इस पे? ज़बरदस्त, और जिस तरह इसकी एनर्जी है और जो कॉन्फिडेंस आपको अब इसको मिला है, तो मेरा ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त बॉल कर रहा है, और जिस तरह ये फॉर्म में है, और आई थिंक इसकी जो क्वालिटी है उसके पेस है, वो अगर आपने लास्ट मैच अर्ली ऑन जो चेक किया था ना, अपने पेस को वेरी कर रहा था कंडीशन के हिसाब से। जो इस टूर्नामेंट में मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है ना, कि वापस जो पास में था हारिस रऊफ, उस तरह के बॉलिंग कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं कंडीशन को। और जिस तरह अजहर भाई ने और आकिब भाई ने जो बात की ना शाहीन की, तो उसके अगर आप नॉर्मली आप देखते हो ना, जब आपका ये हाथ जाता है ना खान के करीब से, ये तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये रिस्ट पोजीशन इस तरफ हो जाता है, तो ये आपका जाते ही जाता है। अगर लेफ्ट ही है ना, तो उसका बॉल राइट को बाहर निकलेगा, और सेम विद द राइट आर्म बॉलर, तो वो इस तरह। अगर आप हारिस रऊफ को देखें ना, तो उसका हाथ थोड़ा सा स्टार्ट से उसका जो ना हल्का से यहाँ पे गैप पे बाहर से आता है, जो कि इसका जो हेल्प कर रहा है आउट स्विंग में, बड़ा ज़बरदस्त इसको हेल्प करता है। तो आई थिंक उसका नेचुरल चीज़ था, जो कि बाद में जो शाहीन ने बाद में डेवलप किया अपने रिस्ट पोजीशन को। पता क्या मेरी अभी इससे, because I don't talk to him, because when he's on tour under any coaching regime, I don't talk to them. But the problem is, the first time when we sent him to the Pakistan team, because look, he was out of the system, never in the system. So first thing, I said, go there and you just call me after the conversation with your coaching staff. You talking about Haris? Yeah. When he get there, and the first thing was, oh, you are a good death bowler, but what about the new ball? You can't bowl, so here is the task, just work on your new ball. So where they have wasted is like last 1.5 years. Death over, 150 pace, what else you want? Bring in another one, new guy, another guy who can bowl with a new ball. The best thing you can get out of any player or anyone, at the start, give them a chance or opportunity where they are good at. And the passage of time, they have plenty of life to learn new tricks later on, isn't it? What I love about him is that he doesn't have this lengthy run-up. So as a batter, whilst batting, you sometimes use the run-up from the bowler as your rhythm spot, where you get your rhythm from. This guy, he's on you as quick as anything else. He reminds me of a Bumrah, because you haven't got enough time to think what this guy's going to do. And with the run-up that he has, and to generate the pace that he does at times, sometimes
it's a little bit too much for batsmen. I think Okay, we need to leave it there for now, please, if we may. Two games today. We've been discussing the later game, which is Pakistan against Namibia. The other game today is South Africa against Bangladesh. Both games up in Abu Dhabi. And we can go right now to Abu Dhabi and check on the pitch for today's game. It's hot and humid. I've managed to stay fresh. What also is fresh is pitch number 7 here in Abu Dhabi. The dimensions behind me is only 62. Straight ahead is a little bit bigger at 80 meters. The square boundaries are 65 and 70. But this pitch here, the fast bowlers have enjoyed bowling on it. They only go under 6 runs and over in the tournament. The two sides, Bangladesh and South Africa, got some excellent fast bowlers. To tell you more about it is a guy who, if I played against him, he would have probably called me his bunny, Murali Kartik. Oh, Darren, I don't think I've ever played against you. I've got no recollection of that. But one thing you're absolutely sure about is this surface. It is quite green, it is quite hard, and I'm pretty sure one man who's going to love bowling on this is South Africa's Andrik Nortje. He has been exceptional right through the tournament. When you look at the pace, he has been one of the fastest bowlers in the tournament. It's not about the pace alone. It's about what he does with it. Controlled aggression, the kind of areas he bowls, and also when you look at his economy rate, it is 5.16. That is exceptional in T20 cricket. The release points, again, quite varied. That tells you a big story as well. He's been a man in form. He's been extremely confident, and I'm pretty sure he is someone Bangladesh will have to reckon with even on this track.